Let's start without wasting any more time. So design thinking, right? Design thinking is a very, very new term, or rather a little very recent term, around 3, 4 years itself, maybe, or 5 years. They started talking about design thinking. There is a lot of buzz. Actually, there is a lot of history behind this. But then recently we have started hearing this more in terms of the product building, in terms of product development. They want to go lean. Everyone wants to save money and build products very quickly and develop products which are useful to the customers in the long run or in the short run also. While all the while doing it in a visual manner, all the while laying it out on paper, all the while taking iterations and feedbacks from customer at every step so that we develop something useful and involve customers in the process as well. So it is a mix of a lot of things. We'll go into the topic slowly, and in between, I'll take brief pauses to see if you're doing okay. So what we learn today, we learn about these things. We learn what is design. Then we will see what is the history, some essential history of design thinking, how it came about. Then what is design thinking? What does it mean? How it is different from creative thinking, for example, or how it is different from creative techniques, or how it is different from lateral thinking or product building. Okay. Then design thinking versus entrepreneurship. As I said, it's a lot of thinking, it's a lot of entrepreneurial thinking mindset that requires basically design thinking. So these two terms are also related. Then principles of design thinking and phases of design thinking, as in the process. What is the process? What are the steps? Then essentially we'll go into what is good design versus what is bad design, then benefits and applications. Okay. So let's jump right into the exciting topic. And we'll start with what is design. Okay. It's a beautiful slide here. So what is design essentially? We design, right? We draw on paper. So we just had a beautiful session sometime back on last week on doodling, right? It really was very interesting and clearly highlighted the differences between doodling, sketching, scribbling, thing, and design, and a high end finished sketch or drawing maybe. So what is design? Designing is a process of designing anything. You could design a building, you could design a plan, you could design a product, you could design a product, as in software product or any physical product. Or you could make a sketch or pattern of something. So some of the definitions given here are from, let's say, Wikipedia or from other institutes, which tell you what design is. It's basically a plan or specification or sketch or a drawing, any kind of visual marks on the paper to elaborate or to clarify a specification for something. It could be for a product, it could be for a building, it could be for some new kind of structure. Okay, and it could be in any form. It could be in the form of actual prototype, like a plastic model, or it could be in the form of, let's say, paper prototype, or it could be assembled or hacked through different materials like thermocol or glues and thick paper and so on, and other pieces of plastic. So that is essentially design. To be able to design something, to lay out a plan for designing something using different materials. We have beautiful quotes sprinkled throughout the PPT to give you more context and to keep you energetic and creative throughout the session. It's by Edward de Bono. The future cannot be analyzed, it must be designed. So it's one of the scientists. I think we have talked a lot about Edward de Bono in some of our past sessions. He has done a tremendous work in the field of lateral thinking and creative thinking. You can also call him father of creative thinking, if you may. And he has emphasized a lot upon design. So what Edward de Bono mentioned is that future cannot be analyzed. Analysis is not the only way of going forward, because till now, wherever we go, whatever we do, we keep hearing about analysis, the importance of problem solving, the importance of having an analytical or creative mindset. Everybody loves to find problems, right?
And everybody, all of us are good to find problems also because our brain scans quickly the differences between A and B. Let's say picture A and B. We can quickly spot the differences. Why? Because our brain is very good at recognizing even minor differences. Hence, all of us are conditioned or better, naturally better at analysis or breaking things down. But on the contrary, we are all doing very poor in terms of design because design needs assembling things together. Design needs putting things together. Design needs visualization power. Design needs to be able to think through or see through things or imagine things before they are created, actual in physical world. Okay. So requires a different process. And future cannot be done with this power itself. Future needs the power of design. Then let's get into the history, where the term came from, what it means, who wrote about it first, and so on. So you can see it begins from 1940 itself and 1959, and all these are nothing but landmarks where different scientists, different authors, different engineers wrote about or mentioned about design in some or the other way, in their books, in their articles, in their white papers. So in 1959, John E. Arnold, this guy wrote a book called as Creativity Engineering. Then he was one of the first authors to write about it. 65, Bruce Archer, Systematic Methods for Designers. He wrote a book. 1969, Nobel Prize winner scientist Herbert A. Simon was the first to mention design as a way of thinking. So in 1969, you can see it's about 50 years back. It was already mentioned that design can be used as a way of thinking, but it's only very recently that we have started using this term in terms of business or tech startups or tech companies or all kinds of companies, as you will see very soon. Then Brian Lawson's in 1980s book, he wrote a book, How Designers Think. It was also a major breakthrough, which kind of uh, highlighted design thinking as a term or as a thinking process or as a new way of thinking, revolutionized way of thinking, breaking the old norms, revolutionized way of thinking. Like we keep hearing a new term also, growth hacking. Similarly, growth hacking is a new future of marketing. Similarly, design thinking is the future of old way of thinking or old way of designing products or creating products. We all know this guy, right? He changed the world. He changed the way we use our phones. He changed the way we look at our technology. He changed the way he created a new benchmark in the field of design. Everybody admires him. He's Steve Jobs. Design is not just what it looks like and feels like, design it how it works. So design is, so what Steve Jobs is trying to say here is that design is not only what you draw on paper or, or make a specification of, or like a blueprint or a map, but design is actually how it works in the hands of a user. Imagine the sleek design of iPhone. Imagine the powerful design of iMac or MacBook Pro machines. Everybody is their fan, right? And so it goes with all the Apple products. Think of Apple Watch, right? They're all trendy, and Apple makes its name in one of the top most technology as well as design companies in the world, even now, after Jobs is gone. Then what is design thinking? We'll see. Let's see some of the definitions. Design thinking overall, it's not a set of tools per se or a collection of tools, even that. It's more of a mindset. It's a way of thinking. It's a way of different hacks put together. You could use various tools. You could use even Google Slides. You could use Mural, one of the new tools. You could use Miro, another one of the new tools. You could use just a PowerPoint or simple Excel sheet maybe, or just some paper or some plastic. So tools are immaterial. It's more of a mindset that design thinking is about. It's about lean thinking. It's about involving customers in your problem solving methods. Now, there are various definitions of design thinking. Uh, you could think of it as a creative problem solving involving customers. You could think of it as a visual way of brainstorming, including all the folks from the different teams and solving and visualizing and prototyping the problems and solving them.
There are essentially 5 steps in design thinking. As we will go, this slide gives you a summarized view, summarized picture of that. But essentially later we will go into more detail. So essentially there are 5 steps. They can be called as P-TIDE, P-T-I-D-E. P is, stands for prototyping, I stands for ideation, D stands for defining the problem, P-T-I-D-E. Okay. D is for define and E is for empathizing and T is for testing. Testing, defining, empathizing with customer, ideation, and prototyping. These are 5 essential major building blocks of design thinking. The process can be used iteratively. The process can be divided into further detailed steps, or they could be used on their own as a single step. For example, typically the journey, for example, you want to create a new product, right? Let's say we want to create a new product, or we want to shape a new product to solve certain problems the customers have. How will you start? In the field of design thinking, in the arena of design thinking, you will start with customer problem definition. You would typically start with, let's say, observation, observing the customer, observing the user. How you will observe the user? Now, there are various techniques. There is usability testing, there is user research, there is surveys, there is customer interviews. You will actually go out in the field to meet customers. You will list their pain points. That is observation, understanding the customer problem. Then you will start with drawing these experiences together as experience maps. Experience maps are nothing but all the customer pain points listed on sticky notes, and they are grouped into themes. For example, one customer talks about 5 different problems or experience with a certain product or how they solve this problem today. You will put all these 100 sticky notes from different customers on the wall or on the whiteboard, or let's say digitally in even in Miro, or let's say Mural, these tools. And then you will put blue sticky notes and create themes on top of that. For example, overall theme is cheap cost. Okay, now under cheap cost there are 5 comments, so you'll group all those yellow stickies under that blue sticky, which is the category. Okay, similarly you will create experience maps. Now once you have this, you will go further and you will define user goals out of this based on these customer experiences. I'm just laying out this process. ये 5 स्टेप का प्रोसेस मैं थोड़ा सा आपको डिटेल करके बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द यूजर जर्नी, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ऑब्जर्विंग द कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग द पेन पॉइंट्स. हम आगे देखेंगे, we'll go into more detail in each, basically some of these steps and see how it works. But just understand it starts with the customer observation. Then we will draw out experience maps based on what we learn from the customer. We will do brainstorming with our team, design thinking team, and create those experience maps. Then out of those maps leads to the next step, which is creating the user goals. तो goals क्या क्या है? यूजर बोलेगा ये ऐप चलता नहीं है, कोई बोलेगा ये सस्ते में चाहिए, है ना, कोई बोलेगा कि ये बेसिकली बगी है ऐप, doesn't work. Someone will say there is no way to submit feedback. Someone will say it takes 10 minutes to open the app, and so on. So every customer will talk of different pain points around your questioning, around your clear definition, problem definition. They will answer the problems in a different way. So you will group them together under themes and create experience. Then out of those maps, you will create goals. Goals में से फिर आप personas बनाएंगे. Personas क्या होता है? A type of a customer. Who is our audience? Okay, so and so is our audience. Our audience is ranged from 18 to 35, IT professionals, or stressed mindset, and they live in metro cities, tier 2 cities, and they are typically free on Saturdays and Sundays, and they watch movies on weekends, they watch Netflix. So and you go on and on. तो कस्टमर पर्सोना क्या होता है? आप एक कस्टमर को आइडियल वर्चुअल रोल मॉडल कस्टमर आप डिफाइन करते हैं. यू इवन गो फर्दर, you even go so much further that you give them names and photos. तो ये क्या करता है? This gives you always a road ahead. This will tell you what your customer likes, what your customer feels, what kind of blogs do they read, where do they visit, and so on. ठीक है. फिर personas से you will create
storyboarding. Now you will to take these goals and create stories along these. स्टोरी बना के हम वो देखेंगे ये प्रॉब्लम लीड कैसे हो रहा है टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन. Okay, then you will do prototyping, or specifically, let's say, paper prototype, to be very cheap and easy. To make it cheap and easy process, you will not create a high fidelity product. You will not even create a low fidelity product, mostly in design thinking. You will just use paper, or you will use thermocol, and you will assemble a jugaad based solution. You will stick together things made of glue. You will stick together things with glue sticks, and you will take a marker in your hand. You will doodle something. You will draw some. Instead of Figma, you will, let's say, draw it on paper, or you can even use tools, but as low fidelity as possible. Okay. Then you will create story maps in the end and see where it leads. Because from story maps, you are actually deriving, you started from user observation, and you will reach up to the very end of story maps, where you have tangible output, tangible Jira stories that can be created. Okay. So this is some of the process in detail, but think of these 5 steps majorly. What are the 5 steps? P tide is the acronym you can remember. Powerful tide. Powerful tide is nothing but P for prototyping, T for testing, I for ideation, D for definition or problem definition or define, and E is for empathize. There's a nice quote by Mr. Einstein. Everyone knows him again. He changed the world. Not just Steve Jobs. Many people changed the world as it is now. Creativity is seeing what others see and thinking what no one else ever thought. So there is such deep, profound meaning in this line from Mr. Einstein. What does he say? He says, आप जो दूसरे लोग देख रहे हैं, आप पेड़ देखते हैं, आप बाहर ट्रैफिक देखते हैं, आसमान देखते हैं, है ना, लोगों को देखते हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं, लोग वो हम देखते हैं. तो हम भी वही सब चीजें देखते हैं जो बाकी लोग भी देखते हैं, बट वो नहीं सोचते जो बाकी लोग नहीं सोच पा रहे. हम वही सोचते हैं जो बाकी लोग सोचते हैं, और जो वही देखते हैं जो बाकी लोग देखते हैं. सो वी आर काइंड ऑफ इन अ, लेट्स से, शीप और हर्ड मेंटेलिटी. तो जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं, और जो लोग बातें कर रहे हैं वही हम भी बातें कर रहे हैं. तो क्रिएटिविटी, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ अ जीनियस, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ अ क्रिएटिव थिंकर? वही चीजें देखकर वो चीजें सोच पाता है जो बाकी लोग नहीं सोच रहे हैं. दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ क्रिएटिव थिंकर. वही देख रहे हैं लेकिन सोच कुछ अलग रहे हैं उसके बारे में. ओके. Now let's see how design thinking relates to entrepreneurship. ये कंपनी बिल्डिंग या प्रोडक्ट बिल्डिंग के साथ कैसे रिलेट करता है? Let's see that. It's very nice. So there was a beautiful book, The Lean Startup, by Mr. Eric Ries. Okay. He was one of the co-founders of a big company, and he is an VC investor in a lot of serial investor in a lot of companies. He made the book famous, called as The Lean Startup. In that he defines the lean model. तो lean model क्या होता है? Test, execute the test, and basically measure and improve. Test, measure, improve. So there are small set of tests you define. For example, जैसे again let's come back to the product बनाना है. तो lean startup में वो क्या कहते हैं कि आप छोटे से tests बनाओ. आपको क्या चाहिए? What do you want the test to do? You define the test. I want to do it as cheap as possible. तो आपने tests define किए. Let's say run a survey. आपको टारगेट ऑडियंस पता करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आएगा. हमको ये पता करना है, किसी भी प्रोडक्ट है हमारा, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कि आप मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है. तो आप क्या करेंगे? यू विल रन सम टूल्स, यू विल डिफाइन सम टेस्ट्स दैट विल वेरीफाई योर टारगेट मार्केट और टेल यू मोर अबाउट योर ऑडियंस. तो छोटे छोटे टेस्ट्स बनाएंगे और उस टेस्ट्स का पास और फेल गोल्स रखेंगे. हाउ विल यू नो द टेस्ट हैज पास्ड? ओनली व्हेन इट पासेस द क्राइटेरिया एंड सो ऑन. तो वो टेस्ट और पास और फेल के मैट्रिक्स के ऊपर से आप उसको मेजर करेंगे. मेजर करने के बाद रिफाइन करेंगे, और ये प्रोसेस इटरेटिवली आप चलाएंगे. सो दिस इज हाउ लीन मॉडल ऑल्सो रिलेट्स टू डिजाइन थिंकिंग, बिकॉज डिजाइन थिंकिंग में भी एसेंशियली हम यही कर रहे हैं. हम कस्टमर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं एट अर्ली स्टेजेस. वी आर गोइंग बाय द कस्टमर नीड्स. वी आर नॉट इग्नोरिंग द कस्टमर एट ऑल. And we are using cheap prototypes as much as possible. We are devising tests. We are using ideation to do
a lot of brainstorming and come up with a lot of solutions, not one solution to the problem, but many solutions to the problem that lead to the problem solving. We create multiple storyboards for one solution, and then we end up choosing something, or maybe end up showing it to all of them to the customers, and then taking feedback again, and then choosing the right solution, and so on. So lean model is very much related to also design thinking. Lean business model is making continuous improvements in the business operation and processes to guarantee efficiency. तो इससे लीन मैन्युफैक्चरिंग भी फेमस हुआ है, जैसे टोयोटा एंड सो मेनी अदर कंपनीज दे यूज लीन मैन्युफैक्चरिंग मॉडल. लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, वो एक कार एक ही बार में बनाते हैं. इंस्टेड ऑफ डूइंग अ बल्क creating a bulk load of cars at a time, their processes are so defined and tuned and lean that they make one car at a time based on the customer order. But they have tuned it so much that they are never short of the stock also, and at the same time they are not using any surplus, wasting any extra money on stock, warehouses, and even the processes. So that is lean manufacturing. Similarly, this model is also followed by tech companies. Here is more info on lean and agile. तो lean और agile क्या होता है? Lean UX focuses on streamlining design processes, minimizing waste and maximizing value. Not the old norms, but how to minimize waste and maximize value. Then cross-functional collaboration between all the teams. So पहले कैसा होता था कि इसका ये काम है, उसका वो काम है, इसका ये काम है, बस ये करेगा, मार्केटिंग वाले लीड लेके आएंगे, सेल्स वाले फिर उसको सेल करेंगे और फिर इंजीनियर बना के देंगे और फिर यूएक्स वाला सिर्फ यूएक्स करेगा. ऐसा नहीं है. In this lean methods, agile methods, in this design thinking methods, everybody is involved together. You have a design thinking workshop going on in a company and everybody is present. Even some folks from the customers are present. तो 4 customers हैं, 4 engineers हैं, 4 designers हैं, 4 product managers हैं, strategists हैं, researchers हैं. Everyone is there. So they collaborate with everyone. It's a cross-functional collaboration. In all these new processes, these are the new norms of solving problems, not a single mindset anymore. Okay. Then another key thing to take away from these new processes is continuous feedback. तो बहुत लंबा साइकिल नहीं रख सकते हम. बहुत लंबे साइकिल में क्या होगा, you waste a lot of money. So the cycles are short. That's why agile is managing your IT development in a short sprint cycle. Similarly, lean मतलब you do very minimalistic tests to identify your product features and get it verified with the customers. And then you end up creating the right product essentially which customer needs. So you quickly get product market fit and you can immediately growth hack. You can immediately make it viral because you already engineered it well. Virality is not accidental. Virality is to be engineered, well thought. Only then can your product become viral. Not only the product should be good enough and should be offered to the right audience, they should also have campaigns and other engineering features designed inside the product that can make it viral. For example, sharing feature or referring feature or affiliate tracking. Okay. Or maybe providing discounts and coupons when you share, or so such growth hacks are used. Then another very important point to take away from these new age processes of building things is strong emphasis on team. So it's not a one-person effort. It's a workshop. It's 10 people brainstorming together. It's 10 people drawing on the Miro board at the same time in these tools, doing these design thinking workshops. For example, experience maps. Okay, take that step of experience maps that I was talking about. So if a design thinking workshop is going on, let's say 20 people are there, they will be divided into 5 teams, for example, 4 people each. And each 4 people team is drawing their own experience map based on the problem, based on the defined problem, based on the solutions that they have received from the customers, based on the customer observations they have done. So everyone, all these teams will draw their experience map. तो एंड में क्या होगा, सबने 20 येलो स्टिकी डाल दिए और फिर सबने उसको ग्रुपिफाई कर दिया और फिर एक कोलैबोरेटर होगा, वो सबके इसमें ग्रुप्स डालेगा, थीम्स डालेगा एंड देन एक्शन आइटम्स डालेगा और फिर वो ग्रुप करके उसमें से मोस्ट प्रायोरिटाइज विल बी टेकन अप. देन इवन दे विल बी आस्क्ड टू रैंक देयर स्टिकीज एंड सो ऑन.
तो ये बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेसेस होते हैं, इसमें सिंगल पर्सन का काम नहीं है। ये जो प्रोसेसेस है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आई विल डिफाइन और यू कैन डिफाइन, नो, दीज आर टीम वर्क, एंड टीम इज नॉट engineers or designers. Team is everyone. You can have representatives of the customer also. People go so far that even customers are involved in design thinking workshops. Most of the times they are done being observed and talked to and taken feedback from. But in some people even go so far to involve customers right from the beginning up to the end to the design in the design thinking process itself, because customer feel confident. They can turn into evangelists to spread the word, to make your product viral, to talk to other people about the problems you are solving, and they can help you out throughout because they look at it from a different angle. Okay, so we got a lot of info on what is lean, what is agile, and how it relates to design thinking, and learn more interesting things. तो हमने अभी देखा what is design thinking. I'll just take a quick recap to jog your memory. We started with what is design, essentially. Then we saw what is design thinking. We saw the history of design thinking. The terms came right as early as 1940. In 1960, 50, 70, 80, there were books and there were authors and scientists mentioning the design thinking as a new process. And recently, in the last 5 to 10 years, maybe in the last decade, all the tech companies and a lot of, especially the good ones, especially the best ones, we'll see some names in the end, they have started using design thinking and lean process and agile process. Agile, everyone knows, most of the people know, but design thinking is still a buzzword among some of the teams. So we are here to learn more about it. Then we saw how it relates to entrepreneurship. Great. Here is another quote to refresh your mood here. Design-driven companies outperform the S&P 500 by 219%. S&P 500 is an index. If some of you don't know, it's an indicator of 50 companies, Nifty 50. Sensex is an indicator of 30 companies, और वो बदलते रहते हैं हर साल. समझो टाटा था उसमें और टाटा को लॉस हो रहा है तो अगले साल दूसरा कंपनी आ जाएगा उसमें, and so on. And all the top shots of India, for example, for Sensex, if you take example, it will include all the companies like Reliance and DLF and all the big guys from all the mining. So different sectors they will represent. Similarly, S&P 500 is a US-based index, very famous. So there is a design management institute in United States, and they quoted that the companies who follow design thinking practices, they continuously outperform other companies by 219%. Their processes are so smooth, they waste minimum effort, they have to hire less, and they create trending products, market sensation products very quickly because of design thinking processes. So it's very, very important. You can understand the importance of this. Now let's go into the principles. How think different, how it is thinking different, how design thinking is different, or what are the principles that. Now there are 4 core rules in design thinking. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि it's not, design thinking is not that I will give you these 3 tools. Obviously there are tools like Mural and Miro and slides and all these other tools also can be used that we have, but it's more of a mindset कि क्या करना है, कैसे सोचना है, customers को कैसे involve करना है, every stage पे how do you iterate again, how do you not think of one step as a failure, because your process itself says you have to iteratively do it, and the process says that you don't have to create one solution for a problem, you have to create 100 solutions for a problem. Or if your team is 30 people big in a design thinking workshop, you may end up with creating 100 solutions. Okay, so the process is very vast and there is no failure. There is no, so all the old definitions are thrown out of the window. There are new things that we learn here. So there are 4 essential rules that guide or shape the design thinking process. One rule is based on humans. You see human-based rule, human rule. Second is ambiguity rule, redesign rule, and tangibility rule. तो ये 4 रूल्स से हमें इसके सार पता चलता है, समरी, एसेंस ऑफ डिजाइन थिंकिंग. ह्यूमन रूल सेज इट इज ऑलवेज रूटेड इन एम्पैथी. तो इसमें प्रोसेस में कोई डिक्टेटर नहीं है, कोई वाटरफॉल मॉडल नहीं है कि सीईओ ने बोला है तो करना है. सीईओ ने बोला प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्ट ओनर को बोलेगा, प्रोडक्ट ओनर स्क्रम मास्टर को बोलेगा, स्क्रम मास्टर इंजीनियर को बोलेगा. ऐसा नहीं है, ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है. इट इज रूटेड इन ह्यूमन एम्पैथी. And human empathy of whom? Human empathy of
customers as well as teams as well as contractors and all the representatives of the team. तो सब मिलके सॉल्व कर रहे हैं इसमें, इस केस में ह्यूमन एम्पैथी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इसमें. Everyone has a right to say in this design thinking process. Everyone is divided into teams. It doesn't matter. किसी टीम में इंजीनियर हैं, किसी टीम में डिजाइनर्स हैं. Basically doesn't. Drawing skill है कि नहीं doesn't matter. But they will all participate in this process. Then ambiguity rule. Ambiguity is inevitable. देखो मैंने बताया कि there is no failure. There is no old definition is no more there. कि ये फेलियर है या ये डिजाइन गलत हुआ, कस्टमर्स ने पसंद नहीं किया तो क्या होगा. तो ये सब चीजों का मतलब गैप ही नहीं है. इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि एम्बिगिटी आएगा ही, बिकॉज यू वांट टू डिफाइन समथिंग विच इज नॉट देयर येट, है ना. आप कुछ बनाने जा रहे हैं जो बना ही नहीं है अभी तक वर्ल्ड में. यू वांट टू सॉल्व, यू वांट टू टॉक टू कस्टमर्स कि ये 10 चीजें पेन पॉइंट्स हैं, अब इनको कैसे सॉल्व करोगे ना. तो जब वर्चुअल रियलिटी किसी ने बनाया या मेटावर्स बनाया, तो इस तरह की प्रोसेसेस यूज हो रही हैं अभी. इतने कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बिकॉज द प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लेक्स इन मल्टी डायमेंशनल. सो लीनियर वेज ऑफ थिंकिंग विल नॉट वर्क. जैसे मैंने बताया वाटरफॉल नहीं चलेगा अभी कि ऊपर से एक बंदे ने सोल्यूशन दे दिया और वो नीचे तक फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा. एम्बिग्यूटी इज इनएविटेबल. एम्बिग्यूटी आएगी ही with customers also, even with inside the team. So you have to understand that ambiguity will be there. Then redesign rule, very very important. All design is redesign. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या मतलब हुआ इसका? कोई ट्राई करेगा क्या बताने का? ऑल डिजाइन इज रीडिजाइन. इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स टू से इटरेशंस आर इनएविटेबल. कोई माइकल एंजेलो नहीं है, लियोनार्डो डा विंची, कि जो एक ही लकीर खींच दिया और वो फाइनल हो जाएगा. ऑल डिजाइन इज रीडिजाइन का मतलब ये है कि गलतियां होंगी ही, एंड यू डोंट एक्सपेक्ट अ फाइनल सॉल्यूशन इन द फर्स्ट स्टेप एवर अगेन, बिकॉज यू विल कंटिन्यू टू डू इट, यू विल कंटिन्यू टू डू इट अगेन, यू विल कंटिन्यू टू डू इट अगेन. यू विल गो बैक टू द कस्टमर, शो द डिजाइन. कस्टमर्स बोलेंगे ये गलत है वो गलत है, देन यू विल कम बैक, ब्रेनस्टॉर्म विद योर टीम, draw those mock-ups again on paper or on Figma, and you take a printout, you go back to the customer or go back to the design thinking workshop. फिर आप सबको दिखाओगे, फिर बोलेंगे कि अरे हाँ अभी ये ठीक है, ये ठीक है, ये थोड़ा अभी भी समझ नहीं आ रहा, ओके लेट्स इंप्रूव इट. तो ऐसे कर करके दे हैव एंड अप मेकिंग सच हाई डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स टुडे, सच गुड कंपनीज, and they are evolved. So they were not drawn like that in the beginning. You're right, Deepika. It's perfect. So all design is redesign means there will be iterations always. So never ever think कि पहला ही आपका master stroke होगा या masterpiece होगा. So it doesn't work like that. As I said, virality is not having a viral product, creating a viral product is not accidental anymore. कि हमने अच्छा कुछ बना दिया and if we build it, will they come? I mean, for customers, it's a very famous quote in lean model. If you build it, will they come? No, they won't come. No one will come. None of the customers come automatically to none of the products actually. The product may be so good, but you still have to market it. You still have to iterate it. You still have to pivot it. You still have to achieve the product market fit. So all your design is going to be redesigned. ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसा भी समझ सकते हैं. In order to reach the final design, you will have to go through n number of steps. Could be 7, could be 10, could be 100, could be 5, could be 2. बट डोंट थिंक कि पहला ही डिजाइन परफेक्ट होगा या पहला ही प्रोडक्ट परफेक्ट होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा. ठीक है. सो ये रूल्स हमें सिखा रहे हैं कि माइंडसेट ही बदलने की जरूरत है. पुराना माइंडसेट ही गलत है कि हम बनाएंगे और सब सही होगा, या पहले से ही हम उस पर बजट लगा रहे हैं, या पहले से ही हम कस्टमर्स का एज्यूम कर रहे हैं. वी आर नॉट आस्किंग कस्टमर्स एंड वी आर एज्यूमिंग व्हाट प्रॉब्लम्स दे हैव, देन वी आर आल्सो एज्यूमिंग व्हाट सॉल्यूशंस विल सॉल्व. नो, दैट वोंट वर्क एनीमोर. तो इन डिजाइन थिंकिंग आपको बताया जाता है कि आप कस्टमर्स के पास जाओ, इटरेटिवली जाओ, उनको बुलाओ मीटिंग्स में, वर्कशॉप्स कंडक्ट करो, ब्रिंग द टीम टुगेदर, वर्क इन टेंडम टू ईच अदर. इट्स नॉट दैट एनीमोर कि इंजीनियरिंग मैनेजर ही सब डिसाइड करने वाला है. इंजीनियरिंग टीम क्या करेगी, हेड ऑफ इंजीनियरिंग विल डिक्टेट. नो, engineers are working hand in hand with designers, with strategists, with marketers, with customers, and so good. Very nice. Let's go to the fourth rule with this. Again, very very nice rule with design thinking, that is tangibility. Tangibility का मतलब होता है although you are doing low definition, but it has to be tangible. आप सपना नहीं दिखा रहे हैं कस्टमर्स को बिठा के, है ना, कि आपने सिर्फ बता दिया कस्टमर को फोन पे कि हाँ हम ऐसा ऐसा कुछ बना रहे हैं, ये है वो है, लाल होगा पीला होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे वहां पे क्लिक करेंगे. दैट वोंट हेल्प द कस्टमर, राइट? दैट वोंट हेल्प एनीवन. सो द प्रोडक्ट्स could be on paper, could be made with plastic, could be made with glue guns and screws or whatever, but they have to be tangible. Customer has to be able to see it. किसी ने मोबाइल स्टोर का डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस किया
तो वो मोबाइल स्टोर का पूरा मॉडल बनाया उन्होंने कि एक प्लास्टिक का थर्माकोल का उन्होंने खड़ा किया, देन वहां पे काउंटर्स बनाए, फिर वहां पे प्लास्टिक के जैसे पेपर, थिक पेपर के मोबाइल पड़े हैं वहां पे। जैसे हम जाते हैं, हाउ यू वॉक इनटू एन एप्पल स्टोर, हमने देखा है कैसा है, कांच के ग्लासेस होते हैं, फिर वहां पे नीचे मोबाइल रखे रहते हैं। तो इस तरह का उन्होंने पूरा मॉकअप तैयार किया लाइक अ फिजिकल स्टोर। तो जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वट एवर इट इज, योर डिजाइन थिंकिंग प्रोटोटाइप्स that customers see or the team sees and provides feedback should be tangible. Words will not fly anymore. Only words will not fly. It could be a video also at very initial stages. Someone will say कि चलो वीडियो से किक स्टार्टर करते हैं, काफी लोग वीडियोस से भी कर लेते हैं बहुत सारा प्रमोशंस एंड दे गेट अ वायरल ट्रैफिक, बट वीडियोस में still not be enough. They have to be tangible. You can get started with the videos maybe, or videos may come later, but it has to be tangible. It could be just a drawing on paper, but the paper is very tangible. You can show the paper to the customer actually. Okay, so these are the 4 rules that essentially lines up or summarizes the design thinking process. They are rooted in empathy. They tell you, the process tells you that ambiguity is going to be there. You have to accept it wholeheartedly. Then you have to understand one design is never going to be perfect or enough, or just the step one. The story will not end in step one. You will have to iterate. And tangibility, most important. Your prototypes should be tangible. Now we will see those steps in detail a little bit. जो हमने शुरू में देखा था ना, ADIPT process और P-TIDE, powerful tide process. Powerful tide is prototype, ideation, empathize and all that. All those 5 steps that we saw. अब उसमें थोड़ा सा we will shed, we will throw more light on that कि उस process में क्या आता है। तो ये देखो, ये 5 steps होते हैं. Beautiful diagram again. All the slides are very nice to keep you in a creative mood for this wonderful session. Empathize, define, ideate, prototype and test. तो हाई लेवल पे सबको समझ में आ गया। देखो, एम्पैथाइज यानी कस्टमर्स के साथ एम्पैथाइज करना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना, उनसे बात करना, उनको फोकस ग्रुप्स बनाना, उनके इंटरव्यूज करना। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज टू रीच कस्टमर्स. यू कैन सेंड सर्वेज, यू कैन शूट ईमेल्स, you can talk to them on the phone, you can bring them in your office, you can do a usability test while they कस्टमर्स ऐप यूज कर रहे हैं और आप बिहाइंड द मिरर उनको देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं स्क्रीन। तो ऑल दीज प्रोसेसेस आर एम्पैथाइजिंग और गेटिंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम कस्टमर्स। देन डिफाइन, डिफाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को लगेगा अरे ये क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डिफाइन ही नहीं करते हैं प्रॉब्लम को करेक्टली। देन टेक अ प्रॉब्लम, डिफाइन इट इन 10 डिफरेंट वेज। डेफिनेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी इटरेटिव प्रोसेस। डेफिनेशन, किसी को लगता है ये कैसे इटरेटिव होगा, प्रॉब्लम तो एक ही है ना। हाँ, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं ना। आप देखो, एक कस्टमर बोलेगा कि मुझे यही प्रॉब्लम है, बट मुझे यू नो आई डोंट वांट टू यूज द ऐप, आई वांट टू कॉल, आई वांट टू, आई एम नॉट अ फोन savvy पर्सन। दूसरा बंदा बोलेगा हाँ मुझे सर्विस तो चाहिए, ऐप भी चलेगा लेकिन ऐप फास्ट होना चाहिए या वन क्लिक होना चाहिए। So every customer, even though having the same pain point or even different pain points, they will define the problem in a different way. तो ये जो डिफाइन प्रोसेस है, आप कस्टमर से सारा इनपुट लेने के बाद आप खुद डिफाइन करेंगे। सो योर डिजाइन थिंकिंग लीड और द टीम will write the problem definition as clearly in simple words as many times as possible. So there will be multiple definitions, and then you will see which are close to the goal, which are very close. Then you will pick them up and work on them. ठीक है, आइडिएट भी सबको समझ में आ गया। आइडिएट इज द मोस्ट क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव स्टेज इन दिस 5 स्टेप्स। आइडिएट मतलब आप, यू विल आइडिएट, ब्रेनस्टॉर्म, use creative thinking techniques by Edward de Bono or other scientists, like random entry or let's say provocation or brainstorming or body storming and so many other techniques, and you will ideate various solutions out. Prototype पे मैंने already बात किया। Prototype is creating paper based, drawing based, video based, plastic molds based prototypes which are tangible to get anything, to get good feedback on from customer. The customer has to see it, the customer has to feel it. It could be paper based, it could be plastic based, it may not be a high end working product obviously in the beginning because it has to be a cheap process, but it has to be tangible. Then test is very very important. We don't rely on test, हमको लगता है बना दिया हो गया, right? Test is also iterative प्रोसेस। तो 10 बार टेस्ट करना पड़ेगा, 100 बार टेस्ट करना पड़ेगा, 20 बार टेस्ट करना पड़ेगा, पूरी टीम को टेस्ट करना पड़ेगा, डजंट मैटर। द प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन एनी ऑर्डर पॉसिबल इन डिजाइन थिंकिंग, बट दीज आर द एसेंशियल 5 स्टेप्स। ये हमने पहले भी देखे थे। देयर इज अनदर एंड देन वी विल थ्रो मोर लाइट ऑन दिस। ठीक है, तो देखो हम अलग अलग तरीके से सेम चीज देख रहे हैं। हमने, आई टोल्ड यू इन 8 स्टेप्स कि चलो यूजर
गोल्स आएगा, ऑब्जर्वेशंस आएंगे, देन यू विल हैव एक्सपीरियंस मैप्स, ठीक है, देन यू विल हैव यूजर गोल्स, स्टोरी बोर्डिंग, है ना, पर्सोनाज, एंड देन यू विल हैव आइडिएशन, स्टोरी मैप्स एंड सो ऑन। तो 8 स्टेप्स का कोई फॉलो करते हैं, कोई ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं, कोई 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स का देखो साइकिल भी दिया है यहाँ पे। सो एज आई सेड, देयर इज नो वेरी वेरी बेंचमार्क डिफाइंड क्लियर कि यही फॉलो करना है, यही 3 ही स्टेप्स, ये 4 ही स्टेप्स। एसेंशियली ये 5 स्टेप्स होते हैं, but some people break them, some people love to break them down in 8 steps, some people love to break them down in 4 steps, as per the product, as per the company, as per the rules that they want to work in. So the definitions are a little fluid, they are a little loose in boundaries. तो ये 4 स्टेप का भी प्रोसेस दिया है, देखो 5 का 4 में डिवाइड कर दिया। ऑब्जर्व द यूजर्स, देन फाइंड देयर रूट प्रॉब्लम्स, एज आई सेड, create multiple solution ideas, as we discussed. Not one solution will help, or not one definition will go fly, and validate with a prototype. And this whole process is actually testing. तो बीच में टेस्टिंग लिख सकते हैं वहां पे। तो ये 5 स्टेप्स हो गए आपके, वही 5 स्टेप्स जो हमने पीछे देखे, ठीक है। सो एसेंशियली इट्स द सेम स्टेप, बट यू विल गेट द जेस्ट आउट। आप किसी भी स्टेप्स में देखो, 8 स्टेप्स में देखो या 5 स्टेप्स में देखो, आपको प्रोसेस हाई लेवल पे समझ में आ रहा है। इट्स एसेंशियली स्टार्ट्स विद यूजर्स, it ends up, then you find the problems or customer goals and create some maps, then you will iterate it, do some ideation with the team, do some brainstorming and use techniques, and create multiple solution approaches and storyboards on top of that. And then you go back to the customers and you show it to them, show the prototypes, bring them in, arrange workshops, talk to them and get feedback, and then iterate the process again until you get some solutions which are closer to the goal, closer to the end product. इस तरह से एक प्रोडक्ट बनता है इटरेटिवली, ऑल दीज कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। सो वेरी वेरी नाइस डायग्राम here. You can take a few moments to look at it nicely, it's very beautiful. तो ये अलग किसी ने देखो बना के रखा है यहाँ पे डिजाइन थिंकिंग का डायग्राम। इस पे क्या होता है, अलग तरीके से दिखाया है, वही प्रोसेस हमने 4 स्टेप्स में देखा, 5 में देखा, 6 में देखा, 8 में देखा, ये इस अलग तरीके से बनाया है। आस्क द विकेट क्वेश्चन। तो आस्क द विकेट क्वेश्चन इज अगेन बी लाइक शर्लक होम्स, लाइक आस्किंग द कस्टमर, प्रोबिंग द कस्टमर, पहला स्टेप जो मैंने बताया, ऑब्जर्व, देन डीप एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, यू सी हियर, ठीक है। बीच में देखो डिसरप्टिव इनसाइट्स दैट लीड टू अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस, बिकॉज़ यू डोंट नो फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाट द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी। देखो दिस इज अ की डिफरेंस विद द ओल्ड माइंडसेट एंड द डिजाइन थिंकिंग माइंडसेट। क्या डिफरेंस है कि हम पहले कैसे सॉल्व करते थे कि ये प्रॉब्लम है और ऐसा सॉल्यूशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, पहले से ही आपने फिक्स कर दिया कि ये सॉल्यूशन इसको सॉल्व करेगा। डिजाइन थिंकिंग में क्या होता है कि यू एंड अप सॉल्विंग द, सॉल्विंग तो बाद में आएगा, लेकिन यू एंड अप राइटिंग द कस्टमर पेन पॉइंट्स, वर्किंग ऑन टॉप ऑफ इट, एंड देन यू एंड अप हैविंग अनएक्सपेक्टेड इनसाइट्स एंड सॉल्यूशंस। तो कुछ नए सॉल्यूशंस भी बाहर आ जाएंगे इसमें, because the process is fluid. Then immerse yourself in the reality. Again, tells you to go deep into the shoes of the customer. Then take it for a spin. You means basically take a prototype, go back to ideation, go back to your room, create, test, recreate, deliver best solutions. Then the cycle is turn on the head, go cosmic fishing and leap into the future. So think deep, think, jump out of the box, and everything is allowed basically. No old norms. You are very you have to be loosen your mind to be very creative in design thinking. There are no fixed solutions, there are no fixed problems, and customers are involved in most of the steps, if not all, most of the steps. ठीक है, now let's see those 5 steps a little more detail as to कि empathize में होता क्या है। वैसे काफी सारा हमने बात किया है इस पे, तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। तो empathize मतलब कनेक्ट करना, connect with users at an emotional level, look at the world through their eyes, very important। हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई डिजाइन करते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं ना प्रॉब्लम, तो वो हमारे माइंडसेट से कैसा दिखता है, हमारे आईज से कैसा दिखता है, हमको वही पता होता है। एम्पैथाइज का मतलब होता है शूज में जाना, उनके शूज में जाना, उनके आंखों से वर्ल्ड को देखना। लुक एट द वर्ल्ड देयर आई, थ्रू देयर आई, then get their priority lists, get their measurable goals. How do customer measures a product is successful, not you? Okay, we will have our own KPI metrics to track whether the product is successful or not, whether a process is successful or not, but customer may have their own KPIs, right? They could be unsaid,
कि ऐप 3 सेकंड में खुलता है तो ही मैं यूज करता हूँ, समवन विल से, है ना. समवन विल से आई डोंट यूज व्हाट्सएप एट ऑल, यू हैव टू रीच मी ऑन एसएमएस, करेक्ट. तो नोटिफिकेशन इनसाइड. Someone will say you, I don't reply ever to emails, you have to call me directly. So everyone have their own preferences, so you have to get their measurable goals as well, then research into their needs, wants, objectives, and co-create the solution with them. Find out what works, what doesn't. Very very important. Qualitative and quantitative research. Qualitative and quantitative क्या होता है? Qualitative मतलब key insights on the qualities of data being used or quality of the key problems. क्वांटिटेटिव इज क्वांटिटी. जैसे टारगेट मार्केट कितना बड़ा है, 1 मिलियन है, 10K है, 5K, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. बट टारगेट ऑडियंस मार्केट क्या करता है? आर दे यंग पीपल, आर दे ओल्ड पीपल, आर दे मेल्स, आर दे फीमेल्स, व्हाट डू दे डू, व्हाट आर देयर हॉबीज, ये क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया. ऑडियंस के बारे में अगर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करना है तो आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने पड़ेंगे. कहाँ रहते हैं ये लोग, क्या करते हैं, कौन से नाइट क्लब्स में जाते हैं, कौन से मूवीज देखते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, कौन से वेब सीरीज देखते हैं नेटफ्लिक्स पे. ये सारा हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च इज नंबर्स. कहाँ पे है, कौन से सिटीज में कितने नंबर है, कितने रीजन में कौन है, कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है. ऑल दैट नंबर बेस्ड स्टैटिस्टिक्स इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. तो ये सारा का सारा एम्पैथाइजिंग में आ जाता है, यूजर जर्नी में. तो हमने देखा बहुत सारे स्टेप्स में कि 8 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं. एवरीबडी हैज डिफाइंड प्रोसेस इन देयर ओन वे, बट essentially empathize relates to the customers and getting their information. Then define. Very nice. एसेंशियली हमको पता है ये 4 क्वेश्चंस होते हैं, हु, वेयर, व्हाट, व्हाई. स्टार्ट विद व्हाई, है ना. एंड व्हेन, मे बी यू कैन ऐड व्हेन, यू कैन ऐड हाउ. ये 6 क्वेश्चन से आपकी काम आसान हो जाता है. हाउ टू डिफाइन, स्टार्ट विद व्हाई. हाउ टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, स्टार्ट विद हाउ एंड व्हेन. When you answer all these 5 questions, 6 questions, that is enough. Now we will see how to use them. Create user personas and customer maps. ये इसके बारे में हमने बात किया था. Then what are the questions? What means what is the big problem that needs solving? Very very important. Who means who has this problem? आप पूछते हैं in design thinking process. Where means where does the problem present itself? कि कोई बोलेगा ऐप नहीं चलता है, तो आप बोलेंगे where does the problem present itself? ऐप चलता मतलब क्या, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बैंडविड्थ प्रॉब्लम है, डाउनलोड होता है, लॉगिन नहीं होता है ना. व्हाट हैपेंस, वेयर, एट विच स्टेप द प्रॉब्लम प्रेजेंट्स इटसेल्फ. स्वाइप नहीं होता है, सपोर्ट नहीं होता है, किल नहीं होता है, लॉग आउट नहीं होता है, क्या नहीं होता है. स्टार्ट से लेके एंड तक जो यूजर जर्नी है उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आता है. ब्रेक इट डाउन इनटू अ हॉरिजॉन्टल स्केल. आपने 10 स्टेप्स में काट दिया उस प्रोसेस को, और आप पिन पॉइंट करते हैं कस्टमर को कि मुझे बताओ ये 10 जगह पे कहाँ पे फटता है, कहाँ पे प्रॉब्लम आता है. दैट मीन्स वेयर एग्जैक्टली. वेयर का एक और मतलब होता है द लोकेशन, कि वेयर इज योर टारगेट ऑडियंस बेस्ड, वेयर डू योर कस्टमर्स गो टू इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ. तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी पावरफुल. देन ये जो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, दिस इज नॉट द ओनली एग्जांपल. यू कैन आस्क देम इट इन ईच क्वेश्चन इन मल्टीपल डिफरेंट. देन व्हाई डज इट नीड टू बी सॉल्व. स्टार्ट विद व्हाई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों सॉल्व करना है, किसके लिए सॉल्व करना है, क्या होगा सॉल्व करने से, है ना. देन व्हाट पैटर्न्स डू यू ऑब्जर्व. पैटर्न्स अगेन एम्पैथाइज. द ब्यूटीफुल कोट, अनदर वन टू गिव यू अ नाइस breather here, by Mary Lou Cook. She says creativity is inventing, experimenting, taking risks, breaking rules, making mistakes and having fun. Okay. देन आइडिएट. तो एम्पैथाइज देख लिया हमने, डिफाइन देख लिया, मेन स्टेप. आइडिएट में क्या होता है? आइडिएट में मैंने बताया क्रिएटिव स्टेप होता है पूरा का पूरा. ये आइडिएट में आप आइडिएट करते हैं, यू थिंक ऑफ आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स एक्चुअली आते हैं. यू कैन यूज माइंड मैप्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग, बॉडी स्टॉर्मिंग, जर्नी मैपिंग, कॉन्सेप्टिंग, बहुत सारे हैं, प्रोवोकेशन, रैंडम एंट्री. तो ये सारे कुछ बाय डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यू यूज. तो कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है कि जैसे बताया कि कोई माइंड मैप बना के ही सॉल्व करेंगे आप, ऐसा नहीं है. इट्स अ सडन insights can also come, as we saw in a beautiful diagram few slides ago. ब्रेनस्टॉर्मिंग हमको पता है काफी सारे लोगों को, ठीक है. बॉडी स्टॉर्मिंग नहीं पता लोगों को, जर्नी मैपिंग नहीं पता. कॉन्सेप्टिंग हमें थोड़ा थोड़ा पता है कि आप कॉन्सेप्ट निकालते हैं. प्रॉब्लम इज वेरी टेंजिबल, यू
go one layer up, you zoom out basically, ऊपर चले जाते हैं आप, बर्ड आई व्यू, और थोड़ा दूर से देखते हैं प्रॉब्लम को, देन यू एक्सट्रैक्ट द कॉन्सेप्ट्स, देन प्रोवोकेशन और रैंडम एंट्री, कुछ एडवर्ड बोनो मेथड्स हमने इन पे बात किया है पहले इन डिफरेंट सेशंस. Then challenge established beliefs, very very important. So you're not going by the norms, you challenge the rules and explore new alternatives. ठीक है. एंड सेकेंड हियर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेटिव वेज टू व्यू एंड डिफाइन द प्रॉब्लम. तो कोई बोलेगा कि हाँ एक ने प्रॉब्लम लिख के दे दिया, अब इसको सॉल्व करो. नो, दैट मे नॉट बी एनफ. सो यू इवन राइट द प्रॉब्लम इटसेल्फ, लेट्स से 10 डिफरेंट वेज. यू विल टॉक टू द कस्टमर्स. हाँ ये प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ नहीं ये सही नहीं लग रहा है, लेट्स चेंज, लेट्स ऐड वन मोर वर्ड. ओके ये सही लग रहा है क्या? नो नो नो, अ लिटिल मोर ट्वीक इट. ओके देन मोर ट्वीक. अभी तो प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं आप इस तरह से, इवन विद द कस्टमर्स हेल्प. So every step is iterative. Okay. Then another key stage, the fifth out of the five, one of the remaining ones for the last one is prototype. Prototype हमने देख लिया already, काफी बात कर लिया इस पे. The prototype should not be high fidelity product always in design thinking. It will be always using paper, using plastic, wireframes, drawings, or anything at all to get customers first-hand feedback. That is more important. Creating inexpensive, scaled down versions of the actual product are called as prototypes. Then another quote by Mr. Bono. You can read it. I'm not reading it for you. Okay. So look at things in a different way. What is test? One of the last stages of those five, of those major five. Test is nothing but to test your solutions quickly, to try your solutions out with actual users. See, the actual user word is very, very important. So beta test doesn't mean you are testing it with the people you know, or you have influencers, or even with influencers or the people in the company, or your own multidisciplinary team. सबको बुला लिया आपने हर टीम से और बोला टेस्ट करो. That may not be enough. So actual users should be involved in some steps, or at least in some steps, as quickly as possible. Very important. 6 महीने लगाएंगे ऐसा नहीं है, आपको इस तरह से वो बनाने हैं टेस्ट, so that customers can give you feedback right off the bat. While you are visiting them, maybe आप गए कस्टमर लोकेशन पे, टेस्ट ले लिया, 2 घंटे में वापस आ गए, and then you assemble the results so fast. I mean, not even 1 day, not even half day, maybe 2 hours, 4 hours, 6 hours, and so on. Then learn the feedback and jump back to any of the stages as needed. ठीक है, तो फीडबैक ले लिया, डेटा सारा कलेक्ट हो गया, एंड यू हैव टू जंप बैक टू द स्टेज. तो कोई बोलेगा अरे ये डेटा लेके पता लगा कि डेफिनेशन ही करेक्ट नहीं किया है प्रॉब्लम का, तो समवन विल जंप बैक टू द डेफिनेशन स्टेज अगेन, है ना. कुछ फीडबैक लेने के बाद कस्टमर्स का पता लगेगा अरे डिजाइन सही नहीं किया था, तो आप आइडिएशन स्टेज पे चले जाएंगे फिर से. यू विल जंप बैक टू आइडिएशन एंड फाइंड आउट मोर सॉल्यूशन. समवन विल फाइंड आउट अरे प्रोटोटाइप गलत बना है, यू नीड मोर प्रोटोटाइप्स और अ बेटर प्रोटोटाइप, तो फिर प्रोटोटाइप स्टेज पे जंप करेंगे. सो एज यू सी मोर एंड मोर, you go more and more into this topic, you're learning that every stage is repetitive, every stage is iterative, and there is no fixed order. You can start anywhere, absolutely, but typically they start with customers or problem definition. ठीक है, process can be used in any order.